Straight your spine, keep close your eyes. Madam Namaskar Mudra. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Yogena Chityasya Padena Vacham Alam Sarirasya Chavadakena Yopakarotam Pravoram Muninam Patanjalina Pranajalirana Tasmi. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. When it's little warm, gently attach your ball and stick. And gently open your eyes. अच्छा, कल जो चर्चा हो रहा था उसके ऊपर किसी का कुछ क्वेश्चन है? नेहा? थोड़ा ये पार्ट डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है, अभी भी स्याद अस्ति स्याद नस्ति, देन ठीक है, वही जैसे कि बोले कि हम लोग जितना डिस्कस करेंगे उतना क्लैरिटी मिलेगा। एकदम ठीक है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। दैट इज जैनिज्म, सद्वेदा। Theory of sevenfold prediction. Theory of sevenfold prediction. Concept of Kayotsarga Preksha meditation. This part we'll discuss today. Okay. Syadvada, the ancient Jain concept of conditional judgment, argues for a relativity of knowledge that is known is varied and no single opinion or aspect of knowledge can constitute in its entirety. As Hariharana puts it, it signifies that universe can be looked at from many point of view, and that each viewpoint yield as different conclusion. This is explained in the famous analogy of 6 blind men and elephant, wherein the group decided that each blind man should feel one part of the elephant and understand what the animal is like, and find comprising result that their impression are completely discordant. This is the thing, मतलब कभी भी अगर हम लोग कोई एक एस्पेक्ट में अगर इनको देखना चाहते हैं तो कोई भी ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ, मतलब यूनिवर्सली कोई एक ट्रूथ है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। People will always have different perspective about the same thing. Yes, जैसे आज कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, कोई भी एक सिद्धांत लेके वो मेरे हिसाब से शायद वो हो सकता है ठीक है, कोई दूसरे के हिसाब से वो गलत है, तीसरे के हिसाब से ना वो सही है ना वो गलत है।
वो सही है वो भी बोल नहीं सकते, वो गलत है वो भी बोल नहीं सकते, सही है गलत है वो बोल नहीं सकते, कुछ भी हो वो सकता है। उसी इंसान का सच है, मतलब लाइक सब कोई के लिए वो सेम थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता है। एकदम, जैसे ये ब्लाइंड मैन एंड हाथी जो उदाहरण है, तो ये सुनने से तो बहुत हास में रसात्मक लगता है, बट अगर सोचा जाए कि वो व्यक्ति जो हाथी का हाथ पैर में जो टाच कर रहे हैं, क्या वो गलत है? वो बोल रहे हैं कि इट्स लाइक ए पीलर, हम्म, वो तो सही है, हम्म, बट दैट इज आंसर इज इनकम्प्लीट, क्योंकि वो हम लोग संपूर्ण हाथी को देख रहे हैं, हम्म, इसलिए। तो संपूर्ण हाथी देख रहे हैं इसीलिए दैट इज इनकम्प्लीट। अगर वो पार्टली अगर हाथी को देखते हैं तो वो शायद वो कंप्लीट नॉलेज होता। हम्म। But तो वही है, सद्वेदा का यही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सच को हम लोग सच नहीं मान सकते। नथिंग वन पॉइंटेडनेस इज ट्रूथ। Although Sadveda is a part of Jain thought, Sadveda can also be applied to modern ethical dilemmas outside of Jain religiosity and doctrine. This AC is an attempt and understand the concept of Sadveda and, and its modern ethical ramification. The Jain theory of knowledge proceeds largely from their concept of indetermination or manifoldness of reality and universe, that is Anikantavada, which is beyond the scope of present work but must be touched upon in order to explain the concept of Sadveda that succeeds it in logical sequence. Sadveda is always it's a logical thing, not कि कोई ऐसे ही बोल दे और उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। Okay, sorry. The theory of Anekantavad repudiates the notion of concentrate universe or reality, thus nullifying the notion of an absolute truth or absolute knowledge. According to Anekantavada, the universe operates distinctly in and of itself, independent from our mental perception, perception, and hence we cannot, on the basis of our perception, conceptualize the entire reality in its main manifoldness. According to the theory, the world operates on the basis of five aspects or real matter. Udgala, matter or Udgala, space, Akasa, time, Kala, medium of motion, Dharma, and medium of rest, Adharma, along with the mental world of infinite soul to arrive at the real. Then one would have to understand all the constitute is. It only then can real be defined. Thus,
as Mukherjee puts it, there is not only diversity but each real is equal diversified. This is central metaphysics of Jainism, which Hiranya elaborates with an example. The atom, according to Jainism, are all of the same kind, but they can yet give rise to infinite variety of thoughts, things, so that matter as consider there is quite an indefinite nature. तो जैसे कोई एक वस्तु को अगर लेते हैं तो वही वस्तु हर एक जगह पे समान रूप से उनको वो रह नहीं सकते हैं। एक उदाहरण जैनिज्म के ये अनकांतवाद में बोला जाता है, जैसे ये सद्वेदा का ही थ्योरी पे, जैसे एक घट, और जैसे घट को अगर लेते हैं, अगर बोलते हैं घट अस्ति मतलब घट है, ये जैसे सच है घट नास्ति घट नहीं है ये भी सच है। जैसे इफ यू आर इन कोलकाता, यू आर सेइंग घट अस्ति मतलब घट है। कोई हावड़ा में खड़े होके बोल सकते हैं घट नास्ति घट नहीं है, मतलब What जो what is ghat? घट इज पॉट मेड बाय Oh, मड। okay, okay. Okay. वो जो कलश होते हैं ना घट जैसा। Got it. हम्म तो वो घट अगर बोलते हैं कि वो कोलकाता में है, वो हावड़ा में नहीं है, तो जो हावड़ा में बैठ के बोल रहे हैं कि घट नास्ति मतलब घट नहीं है, वो जैसे सच है। तो हावड़ा में कोलकाता में बैठ के बोल रहे हैं कि घट अस्ति मतलब घट है, ये भी जैसे सच है। तो एक ही चीज है लेकिन बहुत ज्यादा मतवाद है या उसमें डाइवर्सिफाई है। Thank you. अनेकांतवाद प्रोसेस, अच्छा, proposes the interrelatedness of all reals in the universe, which in turn casually efficient Kantian reciprocity is Reciprocity. intrinsically included in the realism of Jainism. Each premise of the central thesis of Jainism, that is Anekantavad, logically follows from the previous, as manifoldness of the universe implies independence of consciousness and the world, a doctrine ethical of the absolutism of Advaita Vedanta, from which follows pluralism and interrelatedness of all factors contributing to each aspect of the universe. Thus, Anekantavada is considered the most constant system of realism in the Indian philosophy. Having briefly understood the central presumption of Jain philosophy, we can move to the two consequent part of the philosophy that logically follows, Nyaya and Sadveda. The Nyaya points of view of partial explanation of truth from the other side of the coin of Sadveda, delicates of conditional predictions. मतलब जैसे जो न्याय है वो व्यू पार्शियल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रूथ, मतलब वो सिर्फ एक ही चीज को वो एस्टेब्लिश करते हैं, अच्छा ये कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन सदवेदा कंडीशनल पॉइंट, मतलब ये सच है लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सच है, ये गलत है इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, ये दोनों ही दिखाते हैं। लेकिन न्याय में सिर्फ एक ही चीज को दिखाते हैं जो सच है और क्यों वो सच है और कितना हद तक वो सच है।
where Sadveda focuses on a systematic method of arriving at the truth. Nyaya elaborates on a half-truth or prepositions that form complex truth. Thus, while Nyaya provides the analysis, Sadveda focuses on synthesis. Sadveda and Saptabhanga Nyaya used almost synonymously use seven different postulations of judgment is in discriminating the nature of things. Jain insist that every proposition in a syad, a maybe. Thus, according to Sadveda, a proposition whether affirmative, negative, or both, simple or complex, despite only one aspect of truth of a thing, full truth requires a synthesis of variable grid work such proposition. Each proposition then is only relative to the other proposition, which forms the truth. Sadveda offers this schema or grid, which in variety of propositions, alternative and exclusive to the to each other, offer an elaborate understanding of reality. So जो लास्ट डे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनेकांतवाद में कोई भी एक चीज को एक ही रूप से नहीं लेके उसको डिफरेंट एंगल में उनको देखते हैं और इसीलिए दैट इज वेरी इफेक्टिव, दैट इज सदस्ती. अच्छा, as Dasgupta summarized, there is no universal or absolute position or negation, and all judgments are valid only conditionally. Padma So Rag, before we, yes, can I have a question? Before we proceed further, yes. I would like you to reflect upon Nyaya with a certain example, because I have a fair understanding, whatever little understanding I do have about Sadveda, but I'm not too sure I understand Nyaya even one bit. Okay, Can you we have, elucidate upon that with an example, okay, please? okay. Only simple example I am giving. Nay, just like Indian nay or philosophy or logic, Indian logic, that is uh, oboroho and aroho. There is two parties there. Okay, and that is just like human are um, mortal. Okay, just first is, and Ram is a human. So Ram is a mortal. Okay, so that is uh, called oboroho. That is nay or yukti. So there is a simple thing why Ram is means mortal, because as he is a human, that's why he is mortal. So that is nay. Maybe he could not able to die. And what is agar if we are going for Sadveda, then that very simple sentence we can define in seven angle. Ram is mortal. कोई रूप से ये सच है. But in Nyaya, they are saying only one aspect. But Right. here, there is a seven aspect they are going to discuss. But over there, only one aspect. I get it. But one question, please. Is this Naya that is mentioned here in Jainism same as the Naya philosophy of Indian Astika philosophy? Yes, Are they both same? no. Sadveda is more elaborate than Nyaya philosophy. Nyaya, But no. The Nayabad that is mentioned here in Jainism, is it the same as the Naya philosophy, Astic philosophy? yes. Oh, okay. I get it then. Okay. And we are going to discuss about Nyaya philosophy also in detail. Okay, sure. Now I get it. Within 1 or 2 days, we are going to jump into the land of philosophy.
and it will Sure, take sure. a. Thank you, sir. So there is Sad Asti, Anikantavada, Sadveda. 7 perspectives are elaborated as follows. Sad Asti. In certain sense, it is. Sad Nasti. In a certain sense, it is not. Sad Asti, Sad Nasti. Sad Asti Nasti. In certain sense, it is and it is not. Sad Avaktabha. In certain sense, it is indescribable. Sad Asti Avaktabha. In certain sense, it is and is indescribable. Sad Nasti Avaktabha. In certain sense, it is not and is indescribable. Sad Asti Nasti Avaktabha. In certain sense, it is and it is not and is indescribable. This Ram is motto. Sad Asti. ये कोई एक रूप से ये सही है, सद नास्ति ये कोई एक रूप से सही नहीं है, क्योंकि आज के दिन पे भी अगर देखते हैं भारत देश को कौन शासन कर रहे हैं, वही राम या तो कृष्ण, ठीक है, ना मोदी ना योगी ना कोई भी नहीं, नो वन। क्योंकि आज के दिन पे भी अगर कोई राम के अगेंस्ट में या क्या बोलते हैं कृष्ण के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं या कुछ करने के लिए भी जाते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पीपल ऑफ इंडिया विल थ्रो देम आउट, चाहे वो राम सेतु हो या कितने जगह पे हम लोग देखे हैं। तो इसीलिए बोल सकते हैं इन सर्टेन सेंस इट इज, और इन सर्टेन सेंस राम मरणशील है। शायद आस्ती नास्ती, कोई बोलेंगे राम मर गया है, या तो शायद नास्ती कोई बोले नहीं राम तो अभी भी जिंदा है। शायद अवक्तव्य, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। शायद आस्ती अवक्तव्य, राम मर गया है लेकिन इनको वर्णन नहीं कर सकते हैं। शायद नास्ती अवक्तव्य, राम नहीं है, क्या राम मरणशील नहीं है, मतलब मरणशील है, ये गलत है लेकिन इनको वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। और ये सही है और गलत है, इसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जीवित किसको कहेंगे? जो ऐसे ही हु आर गिविंग द रिस्पॉन्स ऑफ द इंस्टिंक्ट, वही जीवित है। या तो कोई एक व्यक्ति जो साल मतलब हजारों साल पहले गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी वो सभी का मन में वो बसा हुआ है, वो जीवित है। तो in this sense, we could not able to say that okay, this is the ultimate only. Anita, any question? No, sir. Okay. This can be explained with an example. Suppose that the object being discussed here is a jar. One person may say that the jar is here, and another who has a different concept of what a jar looks like may neglect it by saying that it is not here. Alternately, supposing the first person meant that the jar is in this location, and the other meant that it is not in the location he thought it was in. So for the first jar is here, for the other it is not here. The first who propositions thus logically combines into the third. The jar is here and the jar is not there. It is important to understand here that this proposition is not a contradiction simply because the jar is being talked about from different angles. डिफरेंट एंगल में इसको हम लोग
देख सकते हैं, कोई एक रूप से ये है और कोई एक रूप से ये नहीं है, जो अभी हम बोल रहे थे। with with any single proposition only grabs one aspect of it, then logically the jar is indescribable simply because there are far too many angles of the same concept which cannot be expressed in words. The existence of jar is inexplicable and indefinite. The other postulations are a mere series in possibilities. The jar may exist, but by be infinite, it may not exist and indefinite, and it may be not be and be indefinite. Like the example of blind man and the elephant, the truth may differ, only coming together when all the seven angles are taken together. These seven postulates, when taken together, comprise the whole truth. Once we examine anything from all seven aspects, we are closer to the knowing the truth about it. मतलब ये सर कोई यस सिर्फ 7 एस्पेक्ट्स के बेसिस पे ही देखेंगे या कितनी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? आई मीन दे आर ओनली 7. देखो जैन फिलोसॉफी के अनुसार कोई भी सच में पहुंचने के लिए 7 ये क्या बोलते हैं थॉट प्रोसेस, मतलब क्या बोलते हैं सदवेदा सद 7 जो प्रोसेस है सच को प्रतिष्ठा करने का जो क्लोजेस्ट तरीका है उससे वो गुजरते हैं। So तो in ये every case, these 7 points we have to consider. यस अगर अकॉर्डिंग मतलब कोई भी एक चीज को सच है वो कितना सच है वो जानने के लिए जाएंगे तो ये 7 तरह से उनको सोचना चाहिए, फिर वो कंबाइंडली एक जगह आएगा जहां पे वी कैन बी इन द अल्टीमेट रियल थिंग, गुड एबल टू नो। जब ये 7 तरह से कोई एक सच को जानने की प्रयत्न करेंगे तब जाके सच में एक जगह पे सच को हम लोगों को एक मिलेगा। कंक्लूजन निकलेगा उसका, राइट? As in from Anekantavad to Ekantavad, is it? यस Right. मीन्स Thank एज you. इट्स अनेकांतवाद बट अल्टीमेट गोल इज एकांत, मतलब एक ही सच है और वो एक सच को जानने के लिए 7 प्रकार से उनको सोचना चाहिए तब जाके कोई एक चीज को अल्टीमेटली पहुंच जाए। ओके, thus Jain philosophy strikes a balance between two extreme views. Its relationship with the Indian philosophical thought is a halfway house between Vedanta, which argues for a absolute singular truth, and Buddhism, which represents the view that all things are relative. In its negation of absolutism and dogma, Syadvada paves the way for the method of systematic discrimination. All truth is relative, but understanding all aspects of the truth brings us closer to true knowledge. No single proposition or aspect of truth is complete in and of itself. This core Jain philosophy has been criticized on many grounds, chiefly by Advaita schools. Sankara comments, as thus the means of knowledge, the knowing subject and the act of knowledge are all alike, indefinite. How can the Tirthankara Jaina teaches with any claim of authority
And how can his followers act on doctrine the matter, which is altogether indeterminate? The philosophy has also been criticized as containing half-truth, lacking in proper synthesis. According to uh, hmm, Hiranya, it is all right so far as it contains against one-sided conclusion, but it leaves us in the end with a little more than one-side solution. Sadveda, animosity towards absolutism, has also been used to un- under, undermine its validity. Other critics consider it a variety of skepticism, while Badarayana, first century, constant that if all knowledge concerning. concerning reality is relative, the Jain view must also be relative. Okay. In answering this criticism, Jain literature that reality is not a continuous or etherical as a theoristic make it. The real world absolute concept rarely hold meaning, and in that Sadveda provides for a system of discriminating unity rather than a dogma that cannot be proven or synthesized. It takes that here and now approach rather than recourse to the ultimate which cannot be defined. It reconciles difference between varying view and in doing so is requisitely lacking in synthesis to avoid any absolute dogma. Against the charge of skepticism, Jain replies that skepticism implies that real knowledge cannot be attained. However, Sadveda merely contends that knowledge is many multifaceted and cannot be comprehended in one paradigm. Radhakrishna defines Sadveda in his statement that Sadveda is a conceptual system in which the presence and interrelation of many concepts is spatially provided for. Regardless of criticism, the implications of Sadveda in Jain ethicals are irrefutable. It formed the basics for their concept of ahimsa, non-violence, since according to this theory, all aspects of reality are interrelated, all forms of lives are interconnected, and thus ahimsa is nothing empathetic relation with others, mindful of diversity of another person, concept of reality. It called for a broader understanding of another point of view and focuses on harmonious living. Since no single point of view is accurate by itself, other opinion must be respected as correlated to our own. The self-flattering habit of supposing that one's own mind is superior to all other is
apprehended admirably by realism of Sadveda. Even outside of paradigm of Jain beliefs, Sadveda holds truth. The point of view approaches of Sadveda can be extended to ethical question as well as cross-cultural relation, even though it was conceived only as means of reconciliation state. मतलब all the time सद्वेदा इस जो 7 तरह से कोई भी एक चीज को देखने का अगर प्रक्रिया अगर देखते हैं और वो अल्टीमेट ट्रूथ वही है, ये 7 तरह से कोई एक चीज को देखने के बाद जहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं, यहाँ पे सैदास्ती जैसे इन सम वेज किलिंग इज ए सिन, किसी को मारना ये एक पाप ही है। कोई एक रूप से अगर देखते हैं तो ये पाप नहीं है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति कोई मिलिट्री में है, वो कोई एक व्यक्ति को मार देते हैं तो उनके लिए वो पाप नहीं है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए वो कर रहे हैं, दैट इज हिज धर्म। तो कोई एक रूप से देखा जाए कि किसी को मारना ये पाप है, और कोई एक रूप से देखा जाए कि किसी को एक मारना पाप नहीं है। मतलब वही जो मिलिट्री मैन वो अगर सामान्य कोई एक व्यक्ति को मारते हैं वो उनके लिए पाप है, लेकिन कोई अगर वो देश में घुस रहे हैं या जो भी युद्ध में अगर किसी को मार रहे हैं तो उनके लिए वो पाप नहीं है। कोई एक रूप से मृत्यु को वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, मतलब किलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। कोई एक रूप से बोल सकते हैं किसी को मारना तो पाप है, लेकिन कोई एक रूप से उनको बोल नहीं सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगह पे कोई अगर कोई एक व्यक्ति को मारने के लिए आते हैं, वो उनका प्रिवेंशन के लिए उनको अगर मार देते हैं या वो कोई उसको मारते हैं वो मर जाते हैं, तो वो पाप नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए उनको वो इनडेस्क्राइबेबल है। इन समवन किलिंग इज नॉट a sin and is indescribable। कोई एक रूप से किसी को मारना ये पाप नहीं है, लेकिन उसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कौन सा रूप में वो पाप नहीं होगा। जैसे और एक रूप देखते हैं कि ऐसे सामान्य रूप से कोई देखते हैं, बहुत सारा मूवीज में दिखाते हैं कि कोई एक लड़की ने किसी को एक को मार देते हैं क्योंकि वो उनका रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट किया या कुछ भी एक अनाप शनाप करने के लिए कोशिश किए, देन शी हैव प्रोटेक्टेड। तो वो उसको क्या बोलेंगे, वो तो पाप है, लेकिन वो उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं कि वो कितना पाप है, क्योंकि वो पाप है ही नहीं। देन इन सम वे किलिंग इज नॉट ए sin and is indescribable। जो अभी बोले, इन सम वे किलिंग इज ए sin, is not a sin and is indescribable। जैसे ऐसे बहुत सारा मूवीज में देखते हैं, देखना जो परफेक्ट क्राइम बोल के कुछ क्राइम होता है, ठीक है। ऐसा कुछ देखा नेहा या स्टोरी सुना परफेक्ट क्राइम? I've heard of this name, The Perfect Crime, but I have not watched any series or anything on this. In Bengali, there is one famous is there that is called Bomkesh Boxi, detective. Bomkesh Boxi. So he have faced lot of case which is perfect crime. जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये फेलुदा इतना बहुत फेमस है बंगाल में, बट उनसे भी फेमस है दैट इज वो ब्योमकेश बॉक्सी। हिंदी में भी देखना मूवीज हुआ था ब्योमकेश बॉक्सी का। यस सर, मूवी भी आई थी और पहले सीरियल्स भी थे इसका ब्योमकेश बॉक्सी। यस सर, क्योंकि उसमें क्या है कि ऐसा बहुत सारा जगह दिखाते हैं, कोई वो एकदम परफेक्ट क्राइम है और जो उसको
आइन के रास्ता से अगर देखते हैं कि वो क्राइम नहीं है, मतलब क्राइम है, लेकिन उस रूप से देखा जाए तो वो उनको वो करना जरूरी था, इसीलिए वो किए हैं। और एज ए पर्सन, शायद इफ यू नो दैट इज ओके, दैट इज रॉन्ग, बट मन कहीं से भी आएगा, अच्छा नहीं वो जो किए वो सही किए, उनको कोई सजा नहीं होना चाहिए। So that is, we can say in some word, the killing is sin, is not a sin, and is indescribable. लगता है कि नहीं, जो किए हैं वो सही किए हैं, उनको वो करना ही चाहिए था, लेकिन वो शायद किसी को मार दिए। Why would you call killing indescribable? क्योंकि वो किलिंग, व्हाट इज किलिंग? किलिंग इज, जैसे कोई एक शत्रु को अगर मारते हैं तो मारना मतलब क्या, किसी को एक शरीर को मारना ही तो मारना नहीं। अगर आध्यात्म में जो जाते हैं तो बॉडी इज ओनली व्हीकल, Okay, not okay, able to that kill way. anyone. Right, हाँ, right, okay. right. I get it. Yes. It's I somewhat just we wanted can to understand this. Right, right. क्योंकि इसमें ये जैनिज्म में भी फिर निराउंसिएशन है, मतलब जन्मंतरवाद है, मतलब कोई किसी को मारते हैं फिर उसका नया जन्म होते हैं, फिर दे आर गोइंग थ्रू, तो इसीलिए वो इनडेस्क्राइबेबल। Right, 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 right. Nice. So this is the thing of Sadveda. So I think you all have to create an example, okay, and next day you need to submit me, okay, with an example you need to explain me about Sadveda. Okay, Shobha? Okay, sir. Okay. Next day I As in need an come up with example. a situation and explain. And Yes, explain yes. them in different ways. Oh, Yes, okay. in different Yeah, way, one okay, truth, okay. but you need to explain in different way. Right, sure. So next Friday we'll meet again and we'll discuss the same. Okay. And next we'll go for the Kayotsarga or Preksha meditation after that. Okay. So we'll conclude the session over here today. That is fine. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your palms. When it's little warm, gently touch your ball and face. Okay. Thank you. Thank you.